Good morning, dears. Today I am going to discuss about new topic, probability of class 12. What do you mean by this? You have read in previous classes. What do you mean by probability? You have already read about this in previous classes. Now, in class 12, in the syllabus, we have conditional probability, multiplication theorem on probability, independent and dependent events, Bayes theorem, probability distribution, and Bernoulli trial. Now Bernoulli trial is eliminated. So we have to read about these things. First of all, we are moving towards conditional probability. Conditional, यानी probability of such event which is bounded by some condition. Which is bounded by some condition. Suppose, firstly, we are taking an example to illustrate it. Throwing a die, numbers occurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now consider an event number greater than 2 appears. Then it will be 3, 4, 5, 6. And another consider event, say it F, first वाले को E कह दीजिए, second को F. Multiple of 2, that is 2, 4, 6. Now, probability of event F when E has already occurred. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इवेंट F की प्रोबेबिलिटी ले रहा है, कह रहा E has already occurred. तो इवेंट F जो है वो सैंपल स्पेस पर नहीं डिपेंड हो रहा, अब वो डिपेंड हो रहा है इवेंट F पे, या इवेंट F की प्रोबेबिलिटी अगर हम ले रहे हैं तो वो इवेंट E पे डिपेंड हो रहा है. तो दिस इज सेइंग एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. This is saying as conditional probability. Probability of event E when F has already occurred. Probability of event F when E has already occurred. तो उस केस में जब E की probability फाइंड आउट करना है, F has already occurred, तो वो F पे बेस होगी. या F की probability फाइंड आउट करना है, E has already occurred, तो F event E event पे बेस हो गया, यानी dependent events. In this case, both the events are dependent events. To finding the probability of such, we know it as conditional probability. So the definition is, let E and F be two events associated with sample space S
of a random experiment then probability of event E when F has already occurred is given by PE by F and defined as PE by F equal PE intersection F upon PF, PF not B0, and PF by E is given as PF intersection E upon PE, PE not B0. This is the definition of conditional probability of an event when other event already happened. When other event already happened. This is the definition. या ध्यान से देखिए, ये सपोज कीजिए ये सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है. This rectangle denotes sample space, and these are the two events E and F. If we have to take the probability of event E when F has already occurred. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हमें E की probability लेना है और F हो चुका है, तो इसका मतलब E की possibility कितने रह गई? E की possibility इतने पे है. E के होने की possibility कितने पे रह गई है? इतने पे होने पे रह गई है. क्यों? क्योंकि इतने पोर्शन पे जो भी एलिमेंट होंगे वो तो F के होने पे आ ही नहीं सकते. अगर F हो चुका है तो उसके होने पे ये एलिमेंट तो आ ही नहीं सकते. तो उस केस में E की प्रोबेबिलिटी जो है, E के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड, वो इस पोर्शन पे बेस हो गई. और इस पोर्शन की किसके रिस्पेक्ट में ली जा रही है? F के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो इवेंट हो चुका है. सो दिस इज PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF. इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी और इस PF की प्रोबेबिलिटी का रेशियो ही इसके इस केस में यानी F के होने पे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है. दिस इसी तरह से सपोज कीजिए E हो चुका है और F की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो E के होने पर F की प्रोबेबिलिटी कैसे आ पाएगी? F के उन्हीं एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी आ पाएगी जो इतने पोर्शन में. F तभी पॉसिबल होगा जो इतने पोर्शन में है, यानी E के हो चुके होने पे की केस में यही एक ऐसा पोर्शन है जो कि F को जिंदा रखा है. अगर इस पोर्शन की बात हम कर ले तो यहाँ पे F तो है लेकिन E के होने का उस पे इम्पैक्ट नहीं है, यानी ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है कि E की प्रोबेबिलिटी हम F की प्रोबेबिलिटी निकाले. E ऑलरेडी हैपेंड. E जब आ चुका है तो F इस पोर्शन का तो आ ही नहीं सकता. आएगा कहां से? सिर्फ पोर्शन. और किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? E के रिस्पेक्ट में. तो PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE. दिस इज द डेफिनेशन. आइए, जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बोला था, या एक अदर एग्जांपल पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. A family has two children. A family has two children. Then two children में sample space क्या होगा?
बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। A family has two children. ठीक है? Find the probability that at least one is a boy, given that eldest is a girl. The eldest is a boy. अगर ऐसे क्वेश्चन तो we have to find the probability that at least one is a boy. तो इसे इवेंट की ले लें, वन बॉय की प्रोबेबिलिटी बीबी, बीजी और जीबी, given that eldest is a girl, eldest is a girl, F GB G, see here, even E में BB BG GB आएगा, इवन F में GB और GG आएगा, तो जाहिर सी बात है कॉमन क्या है, GB। इवन टी में बाकी क्या होंगे, BB और BG। इवन F में क्या होंगे, GB और G। अब we have to find the probability of event E when F has already occurred। यानी ये पता चल चुका है कि बड़ी जो है वो लड़की है, तो उस केस में अब बड़ा लड़का तो हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट वन बॉय की बात कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ ये पोर्शन ऐसा है जिसमें वन बॉय शो हो रहा है और बड़ी लड़की। तो इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। और किस पे डिपेंड है कि F हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4। तो एटलीस्ट वन बॉय की प्रोबेबिलिटी जब हम ले रहे हैं तो दिस इज probability of E intersection F upon probability of F। E intersection F यानी GB एक ही एलिमेंट है और टोटल 4 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, F की प्रोबेबिलिटी 2/4, यानी 50% चांस है कि एटलीस्ट वन बॉय वेल एल्डेस्ट इज अ गर्ल। तो एल्डेस्ट इज अ गर्ल अगर हो चुका है, पहला बच्चा एक लड़की है, तो जाहिर सी बात है अब सेकंड केस में 50-50 की चांस रह गए कि दूसरा बच्चा या तो बॉय होगा या गर्ल होगी 1/2। अब यही चीज को हम पलट कि find the probability that at least one girl या eldest is a girl given that at least one boy, family has at least one boy। ठीक है, तो eldest is a girl की probability पूछ रहा है, family has at least one boy, family में एक लड़का आ चुका है। तो आइए इसको देखें, यानी अब क्या है कि हमें एल्डेस्ट इज अ गर्ल की प्रोबेबिलिटी पूछना, अब फैमिली में एक लड़का आ चुका है, यानी ये इवेंट हो चुका है। तो ये एल्डेस्ट गर्ल कब हो पाएगी, जबकि बॉय हो चुका है, एटलीस्ट वन बॉय अकर्स, जब ये कंडीशन यानी PF इंटरसेक्शन E अपॉन, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है, इसी पे इस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 P इंटरसेक्शन F, और E की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4।
This is 3 by 4. So probability of eldest is occur when family has at least one boy. It is 1 by, it is 1 by. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था एक ऑन थ्रोइंग अ डाई, ठीक है. Let E and F are two events associated with the sample space F S of throwing a die. E is the event that number greater than 2 appears, and F is the event that number is a multiple of 2 appears. तो उस केस में सैंपल स्पेस में हम जानते क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6. E में क्या है नंबर ग्रेटर देन 2 3 4 5 6. F मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6. अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when F has already occurred. यानी इवन नंबर आ चुका है और हमें ये बताना है कि वो ग्रेटर देन 2 उसकी प्रोबेबिलिटी. तो E इंटरसेक्शन F में कितने आएंगे आपके दो एलिमेंट 4 और 6. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 by 6 और E की प्रोबेबिलिटी F की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 by 6. 6 will be cancelled with 6 2 by 3. और अगर पूछ ले कि probability that even number turns up given that die shows a number greater than 2. तो उस केस में भी कॉमन एलिमेंट दो ही रहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 by 6 और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4 by 6. 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 by 4 यानी 1 by 2. Clear? This is conditional probability. Totally based upon this formula. Totally based upon this formula. Let E and F be two events associated with sample space S of a random experiment. Then probability of event E when F has already occurred is given by PE by F and defined as this one. Also, we can define this one. Probability of event F when E has already occurred. अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी और डिनोमिनेटर में जो नीचे इवेंट है उसी की प्रोबेबिलिटी है. डिनोमिनेटर में जो नीचे इवेंट है उसी की प्रोबेबिलिटी रहेगी. दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. नाउ मूविंग अहेड, प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Properties of conditional probability. Properties of conditional probability. Suppose E and F be two events associated with sample space S of a random experiment. Associated with sample space S of a random experiment. Then PS by A. S by A is always 1. Is always 1. इसे ध्यान दीजिए. Let E and F be two events associated with sample space S of a random experiment. Then property S by E is always 1. Why? Use this formula. This will be P S intersection E upon PE. LHS हम लोग ले रहे हैं. We are taking LHS PS by E.
This is PS intersection E upon P. आप जानते हैं E एसोसिएट, E किसका इवेंट है? S का। एसोसिएट कर रहा है उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जिसका सैंपल स्पेस S है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन इवेंट E ही होगा। यानी PS intersection E is such as PE upon PE, and this is always 1. So PS by E is 1. Similarly, PS by F is also PS by F is also 1. This is the first property. Property number 1. P property 1. PS by E is always 1. Now moving ahead, next property. Next property. Property number 2. Property number P E union F by S. P E union F by S is what? या अगर हम और कोई इवेंट ले लें, यहाँ पे S ना लेकर के हम G ले लें, suppose T, F, G are 3 events associated with the sample space S of a random experiment. So this will be P E by G plus P F by G minus P E intersection F by G. This is P E union F by G is P E by G plus P F by G minus P E intersection F by G. आइए प्रूविंग करें। LHS उठाइए। P E union F by G. अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। Conditional probability of E union F when G has already occurred. तो ये क्या हो जाएगा? This will be P E union F intersection G upon PG. Probability of intersection of both the events upon probability of G. Probability of G not be 0. अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला आ गया, distribution of intersection over union. तो क्या हो जाएगा? This will be E intersection G union F intersection G upon PG. This is what? This is union of two sets. One set is this, second is this set. Union of two sets. And probability of union of two sets is what? Probability of first set plus probability of second set minus probability of first set intersection second set whole upon PG. This can be written as PE intersection G upon PG plus PF intersection G upon PG and you know it very well. This is E intersection G intersection F intersection G. This means E intersection F intersection G. E intersection F intersection G.
upon PG. Now, see here, what is PA by B? PA by B is PA intersection B upon PB. Is this? You all are very satisfied with this? अब देखिए यहाँ पे A से मान लीजिए, B से मान लीजिए, A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, वो क्या बन जाएगा? PA by B, यानी this will be PE by G. PE by G. This will be PF by G. And this PE intersection F by G. E intersection F by G. This is our RHS. Hence, we can say probability of E union F by G is probability of E by G plus probability of F by G minus probability of E intersection F by G, where E, F and G all are the events associated with sample space S of a random experiment. एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट के जो है वो सैंपल स्पेस के इस तीनों एलिमेंट, these are the subset of sample space. Hopefully you understand this one also. Do you have any problem? Students who have joined this meeting, if you have any problem, then message it. Now, taking the third probability, third property. What is the third property? Property number third. Property third. P E complement upon F is 1 minus P E by E. Complement means complement of event E, yani not E, event not E. So event not E की probability when F has already occurred. F has already occurred. This is 1 minus P E by F. 1 minus P E by F. Let us see LHS. P E complement upon F. अब आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी है, और इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम E complement क्या ले सकते हैं? This can be written as P S minus E by F. Can we write this or not? Can we write this or not? Yeah, in other hand, we can also obey. We know P S by F is 1. P S by F is 1. And S is what? S is E union E complement. और अभी मैंने आपको E union F के बारे में बताया था. E union F by G क्या था? Probability E by G plus probability F by G minus probability E intersection F by G. तो हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं. This can be written as P S by F minus P E by F
or we know PS by F is 1 minus PE by F. और इससे भी हम लोग कर सकते हैं, this can be written as PE by F plus PE complement by F minus P E intersection E complement by F equal 1. Or we know very well E intersection E complement is none other than empty set. ये क्या है? ये empty set है. Empty set की probability क्या होती है? 0. तो यानी ये वैल्यू क्या हो गई? This is 0. So P E complement by F minus this is 0. This is 1 minus PE by F. So PE complement by F is none other than 1 minus PE by F. So why I am discussing about all these properties? Why I am discussing about? Because these properties are very much important. These properties are very much important to elaborate all the things depend upon conditional probability. ये चीज ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक पे जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टीज आपके लिए एक तरह से की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं उन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप अप्रोच कर रहे हैं उनको सोचने के लिए. These properties gives us directions. These properties gives us direction. और also हम लोगों को जो बहुत लार्ज कैलकुलेशन होता है उससे भी बचा जाते हैं अगर हम राइट टाइम पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं. सो प्रॉपर्टी को अगर हम यूज कर रहे हैं और राइट वे में राइट टाइम पे क्लिक कर जाएं तो वो जो एक बहुत बड़े कैलकुलेशन से भी हमको बचा. सो प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम रीडिंग वन क्वेश्चन and you have to answer me how you have to solve this with in message box. Write down the question. Let there be a bag. Let there be a bag containing 5 white and 4 red balls. 5 white and 4 red balls. 2 balls are drawn from the bag. 2 balls are drawn from the bag, one after the other, without replacement. Without replacement, find the probability of drawing a red ball. Find the probability of drawing a red ball when white ball is already taken. Is already taken. So think about this. Think about this question and answer me in the message box. Now, hopefully you will think about this one. Very simple, yeah. What is asking about?
white ball is already taken, and probability of red ball. Probability of red ball when white ball has already drawn. Simple the problem based on conditional probability. So in first draw, you have taken white ball. Following that, second, you have taken red ball. Or you know very well कि without replacement, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? व्हाइट बॉल कितनी थी? 5. टोटल बॉल 9, 5/9. रेड बॉल्स थी 4 और टोटल कितनी बची? 8. तो 5/9 into 4/8 यानी 5/18 is the answer of this question. Hopefully you understand well about conditional probability and also about these properties, property number 1, 2 and 3, which I have discussed already. We will meet with more concepts in the next part. Till then, goodbye. Thank you. Bye bye.